अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की न्यूज़ पर। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। सफारत खाना पाकिस्तान वियाना ऑस्ट्रिया की जानिब से पाकिस्तानी म्यूजिकल शो ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा वियाना में मुनक्कद पज़ीर हुआ। इस प्रोग्राम की मेहमान खसूसी UNOV और UNODC की सरबराह और डायरेक्टर महतरमः गद्दा फतिवाले थीं। फोक गलूकारों और मोसीक़ारों ने मदर गीत पेश करके सामईन से दाद वसूल की। सामईन की एक बड़ी तादाद जो कि अक़वाम मुत्तहिदा वियाना ऑस्ट्रिया में डायरेक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स और मुख्तलिफ मुल्कों के सफारतकारों की थी, जो कि ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान शो से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। गलूकारों ने पाकिस्तानी रवायती गीत और मौसीक़ी पेश की। मेहमान खसूसी UNOV और UNODC की सरबराह और डायरेक्टर محترمہ गद्दा फतिवाले ने अपने खिताब में कहा, festivities to celebrate the 75th Pakistan Day. It's a special pleasure for me to be able to welcome ambassadors, friends, partners, musicians and artists, and to see the VIC vibrant with activities and events after the lockdowns and restrictions of the past 2 years. The country has been a major contributor of peacekeepers and police officers to UN missions, and I'm also grateful for Pakistan's partnership with Europe and UNODC in the areas of our mandates in the pursuit of the Sustainable Development Goals. I had the pleasure of meeting the new Minister of Foreign Affairs, Mr. Bilawal Bhutto Zardari, in Davos last week, and I informed him that UNODC is launching our new country program this Friday, and that it's a nice coincidence that this event coincides with Pakistan's National Day and the anniversary of the country's membership in the UN. UNODC developed the new country program for Pakistan 2022-2025 in close partnership with the government and in consultation with civil society and other stakeholders. You have been supportive and hosting our office in Islamabad as well as our presence in Karachi and Quetta. We have more than 75 staff in the country and we have been there since the 70s. The country program represents an important component of UNODC's integrated support for the region, which is more important than ever as we work together to tackle challenges in and around Afghanistan and to address the challenges you have referred to. I thank the Permanent Mission of Pakistan for your continued cooperation and for bringing music to the VIC. This event gives us the opportunity to hear traditional, contemporary and international music played on unique instruments that evoke the diversity of the country's culture, traditions and landscape. As the presenter and the master of ceremony has said, music is a language that we can all understand, crossing borders and cultures to connect us across distances and divides, joining us in a common dialogue spanning time and geography. Music speaks to our souls and brings us closer to one another. Vienna is one of the world's capitals of music, and I'm pleased that the UN diplomatic community is doing its part to contribute to the richness of the musical scene in the city. As an instrument of public diplomacy, music helps to build bridges of understanding and pathways to peace. We need the harmony that music can bring now more than ever. I thank Pakistan once again for this gift of music, and I offer my gratitude to the musicians who are joining us today. Please join me. सफीर पाकिस्तान आفتاب अहमद खोखर का इस मौके पर कहना था, We will be able to send a message that we are united against challenges. We are committed to resolve our conflicts through dialogue and cooperation, and that is what music teaches us. Hope you will enjoy this afternoon. Thank you so much. आखिर में सफीर पाकिस्तान आفتاب अहमद खोखर ने तमाम मेहमानों का शो में आने का शुक्रिया अदा किया और ख़वातीन मेहमानों को चूड़ियों का तोहफा दिया गया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आमिर सिद्दीक, 39 न्यूज़, वियाना, ऑस्ट्रिया। अहम इश्यूज हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए।
اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر، کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار۔